अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शंस थी वो मार्केट ने उस पर किस तरह से रेट किया। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो पहले चलते हैं और देखते हैं कि हमने लास्ट वीक हमने क्या कहा था और मार्केट ने उस पर किस तरह से रेट किया। ये हमारा जो है व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारा जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है सिग्नल्स का, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा समरी दिखाते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या कहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले 7 डेज एगो हमने यही कहा था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो बाय में है। बाय में जाने दें, बाय में हम फिर अगर इसकी रिटेस्ट होती है तो रिटेस्ट करेंगे और रिटेस्ट के बाद फिर इसको दोबारा बाय करेंगे। ठीक। तो उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैंने कितने ट्रेड्स लिए, और ये सारे ट्रेड्स हमने आप लोग के साथ अपनी वीआईपी ग्रुप में शेयर किए थे। इस वाली वीडियो में भी हम बायर्स थे, फिर हम इस वाली वीडियो में भी बायर्स बन गए, फिर हमने इसमें सेल किया, फिर आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फिर यहाँ से सेल किया, यहाँ से फिर रिटेस्ट के बाद हमने दोबारा से सेल किया। तो हमने मार्केट को हर एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने इस मार्केट को पकड़ा है। चलिए, ये तो हुई हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस थी, सब कुछ आप लोगों के सामने है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के सामने है। अब देखना ये है कि लास्ट वीक जो परफॉर्मेंस थी वो तो आप लोग देख चुके हैं। अब आने वाली वीक में मार्केट क्या कर सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाना सिर्फ ये है कि मार्केट को अगर आप लोग देख लें, मार्केट ने इस एरिया का किया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद ये वाली जो कैंडल है ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये एरिया, और मार्केट ने इस एरिया को किया है ब्रेक, और ये एरिया जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एरिया है। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस एरिया तक अप्रोच कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखा दूँ, मार्केट इस एरिया तक अप्रोच कर सकती है और फिर यहाँ से हमें दोबारा एक बाय का जो है सेटअप मिलेगा। अगर मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी, इस वाली एरिया में अगर मार्केट ने हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी, तो फिर इसके बाद जो है हम सेलर भी बन जाएंगे। हम फिर इस मार्केट में, अगर मार्केट इस तरीके से आती है और फिर अगर मार्केट इस एरिया की रिटेस्ट करती है तो रिटेस्ट के बाद हम फिर इस मार्केट में सेलर बन जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट का अब हमने देखना ही है कि मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर यहाँ पर क्या अप्रोच इख्तियार करती है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हम सेलर बन जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ये वाला जो कैंडल है डे वन का, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग और इंगल्फ कैंडल बनी है, और ये जो दूसरी कैंडल आप लोग देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को इनके साथ कंपेयर करें तो दे आर मोर स्ट्रांगर देन द बायर, so sellers are more stronger than the buyer, so seller can reach to this level which is a 2680 area, which is a very fantastic area, and market can come to this area very quickly. So in the next week we are become sellers, we will find sell, and we will generate sell signals in our VIP WhatsApp group. But if we go in more detail about it, that how the market will come to this point, so here we will come to the H4 level. So H4 level will clearly identify as that how the market will react in the next coming days. So here we can see that there is an order block. If we mark this area as a breakout structure, okay, the market have directly यहाँ पर, if we see, this is the breakout structure area and this is the order block. Look at this. And what did the market did? The market have break this area, make approach to the head and shoulder pattern,
and now this is coming again to this buying zone. So till uh, so this area we are still in this area we are become sellers. If the market continuously make the break this area, we will in on the retest of this area we will make again a strong sell area from this point and we will make it continuously again to the sell side. So I hope so that the gold market will continuously be downfall. What is the basic reasons of this? The fundamental reasons that the China's government have already discussed that we are not more interested in the buy. So the Chinese government and the Indian government do not want to buy the gold at this high prices. So this is the main reason that the gold market can be fall down towards the uh, Chebiso area. So we are looking and we are hope so that the gold market will make a crash again and we will make generate simply we will generate different type of signals. So basically we sell from this top as well. Everything is in on record with you people and we just close that entry in this area. Then we make a scalping trading for buy and then we generate another sell signal in this area. So this is the reason that we are trading in this way. These all things are on the record. If you are interested and you want to become a part of our team, so you have to open a new account in the XM broker or the Exness broker. Then we will allow you to add in the WhatsApp group. So I hope so that you people will enjoy this trading sessions. I hope and we are very committed to you people that we will make another fruitful trades in the next coming weeks. So if you like the video, like it with make and comment and share with your friends and family members so they will never make a loss. So it's enough for today. So see you on the next video. To tab tak ke liye Allah Hafiz.